Good morning, students. Once again, we are here to discuss the biology chapter of class 10, and we are going to start from our previous book, that is Science Biology class 10, and the first chapter is student life processes, and this is the fourth video we are going to discuss, that is dark phase, light independent phase, because already we discussed the light phase of photosynthesis. Now it is the dark phase of photosynthesis, and our topic is reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Here carbon dioxide is released to glucose carbohydrates by the hydrogen in NADPH, and by using the chemical energy stored in ATP. Dark reaction takes place in stroma. डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है, स्ट्रोमा के रीजन में क्लोरोप्लास्ट पर. मेल्विन कैल्विन gave the details of this process using radioactive carbon. It is also called as a Kelvin cycle. In recognition of his work, Kelvin was awarded by Nobel Prize in 1961. Now, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस के यूटिलाइजेशन किस तरह से क्या यूज़ है. फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नंबर ऑफ रीजन्स फॉर प्लांट्स. फॉर एग्जांपल, food. By photosynthesis, green plants, because photosynthesis is the only process by which green plants synthesize food from simple raw material by using CO2 and H2O, and thus it sustains life on earth. Second, oxygen. Oxygen released during the process of photosynthesis is needed by animals and humans. यानी कि जो फोटोसिंथेसिस के दौरान ये लोग अपना वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे या बाई प्रोडक्ट जो रिलीज करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड के बदले में जो ऑक्सीजन ये रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, वो कितना यूजफुल है ये हम सभी जानते हैं. जानवरों के लिए, इवन ह्यूमंस के लिए भी. इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर respiration process of microbes. Oxygen also supports combustion of fuels. Fossil fuels like coal, oil, natural gas. Fossil fuels जैसे कि coal, oil, natural gas होता है are forms of stored solar energy. ये सब कैसे बनती है? ये सब प्लांट्स में जो स्टोर्ड सोलर एनर्जी हैं उन्हीं की मदद से सिंथेसाइज बाय फोटोसिंथेसिस बिलियंस ऑफ ईयर्स एगो. जो मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो में जो फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज हुआ था ये सोलर एनर्जी प्लांट्स में, वो उनमें बाद में कन्वर्ट होकर फॉसिल फ्यूल्स में बना. तो हियर इज द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स. Difference on the character of definition, external source of energy and medium. Autotrophs and heterotrophs. Here they are able to manufacture their own organic food, and active transport. Organic food is obtained from outside sources required for synthesis of organic food. Here source of energy in organic food, external source not required. Live on inorganic medium, live in contact with organic medium. Differentiate between stroma and grana of chloroplast. On the character of location, chlorophyll and function. तो लोकेशन क्या है ऑटोट्रॉप्स में देखा जाए तो स्ट्रोमा का, इट इज प्रेजेंट मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट. एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ग्रेना रिप्रेजेंट द डिस्क लाइक ग्रीन lamellar thylakoids, not present but contains enzymes. In autotrophs bear chlorophyll A and chlorophyll B. Dark reaction, here in light reaction. Here is a learning plus. Chlorophyll get excited in presence of light. Quantity you may read at this home. ये क्लोरोफिल क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ये एक ऐसा पिगमेंट है जो लाइट में एक्साइटेड हो जाता है एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्वांटिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट और पिगमेंट जो लीफ में रिमेन अनचेंज्ड होते हैं इवन आफ्टर द प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट इज emitting in pockets of energy called photons. लाइट पॉकेट्स में वो इमिट करते हैं जिसको फोटोन्स बोल सकते हैं. स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस. जो साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड रिडक्शन होता है सेल्स में इन द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द लाइट डिपेंड रिएक्शन take place in the thylakoids of chloroplast. Blue and red light spectrum are best for photosynthesis. ATP is energy currency. Leaves are green because they fail to absorb green light of
विजिबल स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, विच इज रिफ्लेक्टेड एंड दैट लाइट इज रिफ्लेक्ट comes in our eyes, so that's why they become green. Here differences between light and dark chemical reactions of photosynthesis, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा है स्टूडेंट्स, here the light phase and dark phase, तो उसी के अकॉर्डिंग ये लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, यानी लाइट फेज में लाइट रिएक्शन होता है। कैरेक्टर हम लोग का ये डिफिनेशन इस कैरेक्टर पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस डिफिनेशन, पिगमेंट, साइट ऑफ एक्शन, प्रोडक्ट्स, ऑक्सीजन, एंजाइम्स। डिफिनेशन, these reactions take place in the presence of light. These reactions are not independent of light. Required, not required. पिगमेंट इसमें रिक्वायर्ड होता है, इसमें नॉट रिक्वायर्ड। साइट ऑफ एक्शन, ग्रेना लैमेला ऑफ क्लोरोप्लास्ट या स्ट्रोमा मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्रोडक्ट क्या, एटीपी, NADPH2 एंड O2। हेयर क्लोरोप्लास्ट, ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन क्या एक बाई प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस में, यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स है। एंजाइम्स नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिलीज्ड रिक्वायर्ड। यहाँ ऑटोट्रॉप्स एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में देखते हैं, ये डेफिनेशन दिखा रहा है फोटोसिंथेसिस एंड केमोसिंथेसिस में। लाइट ऑटोट्रॉप्स में रिक्वायर्ड है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में नॉट रिक्वायर्ड। एनर्जी, सोलर एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ केमिकल एनर्जी। ऑक्यूरेंस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, यहाँ टेक्स प्लेस इन आयरन एंड सल्फर बैक्टीरियम। अदर मोड्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यही है, hetero means different and troph means nourishment. So this is the characteristic of all the animals including human beings also and fungi, that fungi and protists like trypanosoma, paramecium, amoeba, और many bacteria जैसे कि pseudomonas and some non-green plants like parasitic plants like cascuta. They take रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड, ये रेडीमेड ऑर्गेनिक फूड लेते हैं प्लांट्स एनिमल्स। इट इज ऑल्सो बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल सो कैन नॉट ट्रैप द रेडिएंट एनर्जी ऑफ सनलाइट। द लिविंग ऑर्गेनिज्म शोइंग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, उनको हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं। दीज ऑलवेज एक्ट एज ए कंज्यूमर, ये कंज्यूमर के तौर पे, एंड प्लांट्स जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। ये इसलिए हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली उनका बना हुआ फूड को कंज्यूम करते हैं इन द इकोसिस्टम। मेड ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स डिपेंड अपॉन द type of food, whether the food source is fixed or mobile, availability of food material, a strategy of food procurement on the basis of nature of food. Heterotrophic nutrition is a 3 types. Heterotrophic 3 तरह से डिवाइडेड है फॉर द सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक वो होते हैं, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो अपना फूड सप्लाई लेते हैं कहाँ से, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। द सेप्रोफाइट्स आर मेनली कन्फाइंड टू बैक्टीरिया, सेप्रोफाइट्स मेनली कन्फाइंड होते हैं बैक्टीरिया और फंगी में। फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक नियोटिया एंड मोनोट्रोपा आर ऑल्सो सेप्रोफाइट्स। सिंगल ईस्ट प्लांट, saprophytic fungi and bacteria release digestive enzymes outside their body. The enzymes break down the solid and insoluble organic food into soluble and inorganic form. This soluble food is absorbed. Thus they bring about the decay and decomposition of dead organic matter. ईस्ट इज एन एग्जाम्पल, ईस्ट एक तरह से हम लोग देखा जाए तो एक एग्जाम्पल है जो सेप्रोफाइटिक फंगस के रूप में आता है। ईस्ट feed saprophytically on sugar solution on which it grows mushroom, and molds are also saprophytic fungi. Saprophytes acts as decomposers and reducer in the ecosystem. Now parasitic nutrition जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, and holozoic nutrition we will discuss in the next chapter, because after that we have to discuss some more points, and after that our life process, the various processes in nutrition is going to be start. Okay students, that's all for today. We will discuss the remaining chapter in the next video. Okay, thank you, have a nice day.